Hello students, welcome to the English classes for classes 9th. I am Mrs. Sangeeta Saxena and today we are going to continue with the next part of the topic that we took in the last turn, that is tenses. In the last turn we did the present simple present tense and also saw the negative of the same sentence. Today we'll be doing the left part of the last turn and also we will continue towards the present continuous or present progressive tense. So in the last turn we did till the part where we got to know that what are the negative of a present affirmative sentence. Now let's see the word order of a negative sentence. So the following is the word order to construct a basic negative sentence in English in the present tense using don't or doesn't. ठीक है. So now whenever the subject is I, you, we, they, that is first person or a second person or a plural, okay, then you're going to use don't. You're going to use don't as an helping verb. Then comes the verb in its first form and then the rest of the sentence. And in case there is going to be a third person, that is he, she or it, ठीक है, उस जगह पे आप डजंट यूज करोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना किसी एडिशन के एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. नाउ सी फर्स्ट पर्सन, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट टर्न, फर्स्ट पर्सन का मतलब तो आप खुद, ठीक है, जो बोल रहा होता है सेंटेंस, ठीक है, जो कोई बात बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है. द स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, द वन हु लिसन्स टू इट इज द सेकेंड पर्सन, ठीक है. और अगर कोई किसी और के बारे में बात हो रही है इन दोनों को छोड़ के, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि उस कॉन्वर्सेशन में इंक्लूडेड नहीं है, वो थर्ड पर्सन कहलाता है, ठीक है. सो फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, सेकेंड पर्सन इज द लिसनर एंड थर्ड पर्सन इज समवन अबाउट whom we are talking. Okay, so whenever you're talking, whenever you are speaking, you're saying a sentence in first or in second person, then we use don't. Then there's going to be verb's first form and the rest of the sentence. And next, if there's going to be a third person, then we use doesn't, the first form of the verb and the rest of the sentence. For example, here you can see the sentence is I don't buy cereal for breakfast, ठीक है. So I is your subject, don't is your helping verb, then the main verb is buy and the rest of the sentence is cereal for breakfast. Okay, so for this the simple sentence would have been I buy cereal for breakfast, ठीक है. इसका normal sentence simple present में होगा I buy cereal for breakfast, ठीक है. जब इसका negative बनेगा then you will say I don't buy cereal for breakfast. Okay, now one example in the third person is he, let the sentence be he buys. Yeah, so the sentence in the present tense can be he buys cereal for breakfast, and then you can write the negation of the sentence like he doesn't buy cereal for breakfast. Now the thing to be noted here is that whenever you make the negation of a sentence in which the subject is a third person, then the s in the verb is that is neglected. In the last one I also told you this rule. Let's see again what it is. When the subject is he, she or it, we add doesn't between the subject and the verb to make a negative sentence. Notice that the letter s at the end of the verb in the affirmative sentence, because it is in third person, disappears in the negative sentence. Okay, example here is he speaks German. This is a normal sentence in present tense, and when you'll go for the negative of the sentence it says he doesn't speak German, ठीक है. This is a negative. और आप notice करो कि जो यहाँ पे speak verb था, affirmative में उसको speaks लिखा था और negative में उसको speak लिखा है, ठीक है. So this is how a negative sentence is made. Some further examples can be you don't speak Arabic, John doesn't speak Italian. So now see, you in here is second person, you is the listener, तब यहाँ पे don't use हुआ है. John doesn't speak Italian, ठीक है. John is the third person, John ना ही speaker है, John ना ही listener है, तो John के साथ doesn't use होगा, ठीक है. So these are some of the examples in here. Now we'll go for
continuous tenses. Just a second, let me change the slide. We'll go for continuous tenses. Now continuous tenses are also known as present progressive tense, present progressive tenses or present continuous tenses. Now we use continuous tenses in the following places: when somebody is doing something at this moment, like when something is going on in continuation, when something is happening at this moment, when the action has started but hasn't finished, to talk about something that is happening around the time of speaking but not necessarily at the exact moment. सो दिस सेज कि अगर आप कोई काम अभी आपके सामने चल रहा है या कहीं और चल रहा है, भले ही आपके सामने ना चल रहा हो, whenever a thing is going in continuation, वो मतलब वो टास्क स्टार्ट हो गया है और अभी फिनिश नहीं हुआ है, वो चल रहा है, तो प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस सी द ऑर्डर. फर्स्ट एग्जांपल इज सारा इज चेंजिंग हर क्लोथ्स राइट नाउ. Okay, we are learning the progressive tense in English. So what is it? We are learning. ठीक है. इसका क्या है? देखो, we is subject, are is your helping verb, learning is your verb here. Now see, learn is the first form of the verb plus ing. We are learning. The progressive tense in English is the rest of the sentence. ठीक है. The main three parts that you have to focus on the sentence are the subject, the helping verb and the main verb. ठीक है. Next example, it is snowing at the moment. It is snowing. Now it is going to be the subject, is the helping verb. Snowing में snow आपका first form of the verb is snow plus ing. So यहाँ पे this is how this is happening. So always notice this thing कि जब भी आपके साथ आपके पास आई, वी, यू, दे होता है. ठीक है. इन सब केसेस को हमेशा प्लूरल मान लेते हैं. देखो, आप लोग एक सिंपल एल्गो अपने दिमाग में बैठाओ. जब भी कोई सिंगुलर चीज होती है तो वो इज होती है, सिंगल चीज होगी तो इज होगी, प्लूरल होगा तो आर होगा. और नॉर्मली क्या कहते हैं कि जब भी ही, शी और इट होता है, इसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं और आई, वी, यू, दे को एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं. भले ही आई और यू सिंगुलर हैं, लेकिन उनको हम लोग जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो एज अ प्लूरल ट्रीट किया जाता है. ठीक है. तो आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो प्लूरल है. उनके साथ हमेशा आर यूज होगा और डोंट यूज होगा. ठीक है. उनके साथ कभी भी इज नहीं यूज होगा और डजंट नहीं यूज होगा. दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ सिंगुलर, एज अ प्लूरल, एज प्लूरल. ओके. ही, शी और इट ये हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होते हैं. इनमें हमेशा इज यूज होगा और डजंट यूज होगा. ठीक है. और पास्ट में भी यही होता है. पास्ट में वॉज एंड वर का कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है. तो वॉज इज फॉर सिंगुलर, वर इज फॉर प्लूरल. दो आई विल टेल यू दिस आफ्टरवर्ड्स एज वेल. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये आप दिमाग में बैठाओ कि पास्ट में वॉज इज सिंगुलर, वॉज इज फॉर सिंगुलर एंड वर इज फॉर प्लूरल. तो आई, वी, यू, दे के साथ वी आर गोइंग टू यूज वर, and he, she, it के साथ we will use was. Okay. So I hope that this much algorithm is clear to you. That is, we are going to use what? He, she, we are going to use verb की first form plus ing for the verb in progressive tense, और आपका जो भी subject होगा उसके हिसाब से is, are use करेंगे. ठीक है. So students, this is all for today. I hope you are understanding it well. In case of any problem, you can contact me on my WhatsApp number. So have a nice day.